everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we will be continuing with our examples of chapter number 9. So we have done till example number 8 children. So we are starting with the 9th example in this video. So the 9th example is on page number 147, right? So the 9th example says multiply. And the first part is a plus 7 and b minus 5. Now we have to multiply a plus 7 and b minus 5. So again children, multiplying a binomial expression by a binomial expression. So we know the method. A plus 7 into b minus 5, right? So a को पहले multiply करते हैं b से, देन ए को मल्टीप्लाई करते हैं -5 से. सिमिलरली 7 को मल्टीप्लाई करेंगे b से, देन 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से. सो a इंटू बी विल गिव अस ab, a इंटू -5 विल गिव अस -5a, राइट. नाउ 7 इंटू b विल गिव अस +7b एंड 7 इंटू -5 विल गिव अस -35, right? So this is ab, this is a, this is b, this is 35. So I don't think अब हम इसको आगे evaluate कर सकते हैं. Why? Because ये सारी अब unlike terms हैं. So it means this is the answer. Okay. So multiplying a binomial expression by a binomial expression is very easy. It's just that हमें माइंड में ये रखना है कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना कैसे. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद तो वी हैव टू जस्ट इवेल्युएट दी like terms. Okay, so this was the first part of example number 9. Now let's come to the second part. Now coming to part number 2. So the second part of example number 9 is a square plus 2b square and 5a minus 3b. So these are the two binomial expressions जिसको हमें multiply करना है. Now here children again we have to apply the same rule. A square plus 2b square into 5a minus 3b. ठीक है. So multiplying a square by 5a first, then multiplying a square by -3b. Similarly 2b square by 5a first, then 2b square by -3b. So first we multiply a square by 5a. What we'll get? 5a cube. ठीक है. Then multiplying a square by -3b. So -3 as it is, a square b. ठीक है. Now multiplying 2b square by 5a. So this will be 5 2s are 10 a b square. ठीक है. Now multiplying 2b square by -3b. So ये हो गया हमारे पास माइनस का साइन. 2 3s are 6 b cube. So children now we have a cube, a square b, a b square and b cube. So अब हमें यहाँ पर हमारे पास ये सारे unlike terms हैं which means that this is our answer. So when we multiply a square plus 2b square and 5a minus 3b, we'll get 5a cube minus 3a square b plus 10ab square minus 6b cube. ठीक है. So this was our example number 9 in which there were two parts, part number 1 and part number 2, जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना था टू बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को, राइट. सो नाउ कमिंग टू आवर एग्जांपल नंबर 10. Example number 10
of chapter number 9. So example number 10 is simplify a plus b to a minus 3b plus c and minus 2a minus 3b into c. Okay, so now we have to solve, we have to simplify this expression. Now this is a binomial expression and this is a trinomial expression, and similarly here we have a binomial expression and a monomial expression. So अब हमें brackets को eliminate करना है. It means we have to multiply binomial expression by a trinomial expression and a binomial expression by a monomial expression, and बीच में negative sign as it is आएगा. So multiplying a by 2a first, then a by minus 3b, then a by c. Similarly b by 2a, b by minus 3b, b by c. So let's see हमारे पास open brackets open करके क्या आता है. So a into 2a will give us 2a square, then a into minus 3b will give us minus 3ab, then a into c will give us plus ac. अब a का काम खत्म. Now let's come to b. Now b into 2a will give us plus 2ab, b into minus 3b square, so minus 3 as it is, b into b is b square. Now b into c, so plus bc. ठीक है. अब ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, बीच में है नेगेटिव साइन, सो वो आएगा एज इट इज. नाउ मल्टीप्लाइंग 2a minus 3b by c. सो c को पहले हम 2a से करेंगे, देन c विल बी मल्टीप्लाइड टू माइनस 3b, बिकॉज जब भी हमारे पास ऐसे कुछ होता है तो हम पहले फर्स्ट वाले टर्म से करते हैं, राइट. सो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2a है, ठीक है. सो दिस विल गिव अस 2ac minus 3b into c will give us minus 3bc. ठीक है. अब ये वाले ब्रैकेट को ओपन करने के लिए माइनस का साइन है, सो इन दोनों के साइन हम चेंज कर देंगे. ठीक है. सो अब पहले देखते हैं यहाँ पे कुछ लाइक टर्म है. सो वी हैव ab and ab लाइक टर्म है. ठीक है. सो 2a square as it is minus 3 plus 2. So minus 3 plus 2 will give us minus 1. So minus ab plus ac minus 3b square plus bc. ये पॉजिटिव 2ac था तो ये माइनस 2ac हो जाएगा, एंड दिस वाज नेगेटिव, सो ये हो जाएगा पॉजिटिव 3bc. ठीक है. नाउ इक्वेटिंग 2a square as it is, ab as it is, so minus ab as it is. अब AC और AC हमारे पास है this one and this one, so plus 1 minus 2 plus minus minus 1 and sign negative, so negative AC हो गया ये. ठीक है. अब minus 3b square as it is, and now we have BC, right. so अब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, so this will be BC plus 1bc plus 3bc will give us 4bc. So now this is the answer. 2a square minus ab minus ac minus 3b square plus 4bc. Yes, this is the answer. So this was our example number 10, जिसमें हमें सिंप्लीफाई करना था, बट इसमें हमें अलग अलग 2 पार्ट्स गिवन थे. इसको अलग सिंप्लीफाई किया, इसको अलग ब्रैकेट एलिमिनेट किया, देन बीच में माइनस का साइन था तो नेक्स्ट वाली एक्सप्रेशन के साइन चेंज हो गए, एंड देन हमने इवैल्यूएट करके एक आंसर निकाला जो अब फर्दर इवैल्यूएट नहीं हो सकता, बिकॉज अब इसमें सारी अनलाइक टर्म्स हैं. ए स्क्वायर ए बी ए सी बी स्क्वायर बी सी, राइट. तो सारी अनलाइक टर्म्स हैं. नाउ वी कैन नॉट फर्दर इवैल्यूएट दिस एक्सप्रेशन. सो सिंप्लीफाइंग हमें आंसर मिला 2a square minus ab minus ac minus 3b square plus 4bc.
ठीक है. So this was our example number 10. Now proceeding to example number 11, which is on page number 150 now. Children, example number 11 is on page number 150, and example number 11 says using identity find the first part is 2x plus 3y whole square. Now children, 2x plus 3y whole square. I told you जब भी कहीं पे whole square होता है और a plus b बन रहा होता है, so a plus b whole square का हमारे पास एक identity होती है, that is a square plus 2ab plus b square. So I think in this part वही वाली identity apply होगी. So let's start. Using identity a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square, right? So a plus b whole square हमारे यहाँ पे बन रहा है, a is 2x and b is 3y. ठीक है. So अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है. a square means 2x whole square plus 2 as it is. a is 2x and b is 3y plus b square means 3y whole square. ठीक है. So अब हमें इसको इक्वेट करना है. So for that we have 2x whole square means 4x square plus 2 2s are 4, 4 3s are 12x y plus 3 3s are 9y square. So yes, now we cannot further evaluate this because all three terms are unlike terms. So this is the answer, right? So when we have a plus b whole square, so हम ये वाली identity apply करते हैं, that is a square plus 2ab plus b square. ठीक है. So उससे हमारे पास evaluate करके आंसर आ गया. Now we cannot further evaluate it. Okay. So this was our part number 1 of example number 11. Now coming to the second part. Second part is 103 whole square. Children, this is 103 whole square. अब इसमें हम आइडेंटिटी कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 103 को हम 100 plus 3 whole square लिख सकते हैं. उससे क्या होगा? With that we can apply the identity a plus b whole square. In that a would be 100 and b would be 3. So now using identity a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. Now we'll get a square means 100 square, right? Plus 2 as it is, a is 100, b is 3 plus b square means 3 square. ठीक है. So 100 square we all know it is 10,000 plus 2 3s are 6 and 2 zeros as it is plus 3 3s are 9. So इसका आंसर हमारे पास आ गया 10609. So when we will do the square of 103, we'll get 10,609.
ऑलराइट, दिस वाज आवर सेकंड पार्ट. अब इसमें हमारी कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही थी, तो हमने 103 को 100 प्लस 3 लिख लिया. सिमिलरली इफ अगर हमारे पास होता 98, ठीक है, 98 स्क्वायर, सो हम इसको 100 माइनस 2 होल स्क्वायर लिख लेते एंड देन हम इसको सॉल्व करते, तो हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होता. राइट, ओके. सो दिस वाज आवर सेकंड पार्ट ऑफ एग्जांपल नंबर 11. And with this, children, we have completed our example number 11 also. So now coming to example number 12. Now, this was example number 11. Now coming to example number 12. So, example number 12 is again using identity find and is on page number 150 only. So, part number 1 is 4p minus 3q whole square, right? So 4p minus 3q whole square. Now in this, children, our identity number 2 we can apply, a minus b whole square, right? So a would be 4p and b would be 3q. Okay, so using identity a minus b whole square equals to a square minus 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, सो अब a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे है. सो नाउ वी हैव टू अप्लाई दी a एंड b इन RHS. सो RHS में a स्क्वायर मीन्स 4p होल स्क्वायर minus 2 as it is. a is 4p, b is 3q and again b square means 3q whole square, right? So अब हमें now we have to find the square of 4p. So 4 4s are 16 and p is a p square, right? So 16p square minus 4 2s are 8, 8 3s are 24pq plus 3 3s are 9q square. So we have 16p square plus 24pq, sorry, minus 24pq plus 9q square. So this is the answer. Now we cannot further evaluate it because ये already अब हमारे सारे unlike terms बन चुके हैं. So this is the answer. So now we have to children we have to just observe and observe करके जो identity लग रही है वो apply करनी होती है. Then our answer becomes very easy. Solve करके answer आ जाता है and also calculation becomes very easy. ठीक है. So this was our part number 1 of example number 12. Now coming to the second part. Second part of example number 12 is 4.9 whole square. So children, now we have to find the square of 4.9. I already told you जब भी point के बाद 5 से ज़्यादा term होती है so उसको हम 4 plus 0.9 नहीं लिखते, we write it as 5 minus 0.1 whole square. And ऐसा क्यों करते हैं? Because 1 का स्क्वायर करना ज़्यादा इजी होगा 9 के स्क्वायर करने से, राइट? सो जब भी 4.9 है या 6.9 है तो उसको हम 7 माइनस 1.0 लिख देंगे. ऐसे 4.9 को 5 माइनस 1.0 वी कैन राइट. ओके, सो नाउ वी हैव टू डू square of 5 minus 0.1. So basically this is a, this is b, so a minus b whole square, right? So using identity a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square, we get a square means 5 square
right? Minus as it is 2 as it is, a is 5, b is 0.1, ठीक है, plus 0.1 whole square because ये है 5 का sorry b का whole square means 0.1 का whole square. Now equating this we get 5 5s are 25 minus 5 2s are 10 and 10 1s are again 10, but one place के बाद है 0, it means वन प्लेस के बाद है पॉइंट, इट मीन्स 1.0, मतलब ये 1 ही हो गया. 25 माइनस 1 प्लस 0.01. वाई? बिकॉज 0.1 इंटू 0.1 करेंगे तो आंसर तो 1 आएगा, बट 2 प्लेसेस के बाद पॉइंट लगाना है, मीन्स 0 लगा के एक पॉइंट लगेगा एंड एक और 0 आएगा. इट मीन्स दिस इज दी आंसर. अब हमें 25 माइनस 1 होता है 24 एंड 24 प्लस 0.01 अगर हम करेंगे सो विल गेट 24.01. So the answer comes out to be 24.01. So when we will do the square of 4.9, we will get 24.01. Alright. So this was our second part of example number 12. Now coming to example number 13. So only two examples are left now, example number 13 and 14. Let's do it in this video only and complete our chapter number 9. So coming to our example number 13 now. So example number 13 is using identity evaluate. So the question is again same, and example number 13 is also on page number 150 only. So part number 1 says 3/2m plus 2/3n, 3/2m plus 2/3n, 3/2m minus 2/3n. So now we have this and we have to apply the identity. Children, एक हमारे पास identity होती है a minus b, a plus b equals to a square minus b square. So I think इसमें a plus b, a minus b यही apply हो रहा है. So using identity, a minus b, a plus b equals to a square minus b square. So a, this is 3/2m is a and 2/3n is b. ठीक है. So a square means 3/2m whole square minus b square means 2/3n whole square. ठीक है. So this is 3 3s are 9/4 n square minus 2 2s are 4/9 n square. So I hope this question is clear. So this is the answer. Now we cannot further evaluate it because ये दोनों अब unlike terms हो गई हैं. ठीक है. So this is the answer children. अब इस example में हमारी ये वाली identity use होगी a minus b, a plus b. So उसके हमारे पास आंसर होता है a square minus b square. And sometimes हमें a square minus b square given होगा तो हम ये भी apply कर सकते हैं. ठीक है. So vice versa भी हम इस identity को use कर सकते हैं. Alright. So this was our part number 1. Now coming to the second part. Now the second part of example number 13 is 983 whole square minus 17 whole square. Yes. So the example is 983 whole square yes 983 whole square minus 17 whole square.
Now children, we have 983 whole square minus 17 whole square. So अब हमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी अप्लाई होती दिख रही है, that is a square minus b square. So using identity a square minus b square equals to a plus b, a minus b. So in last part children हमें ऐसे बना के दे रखा था and we had to use this identity. अब this part, and अब हमें ऐसे दे रखा है, so we will use this part. So this identity can be used vice versa as well. So अब हमें a square minus b square में this is a, this is b. So a plus b means 983 plus 17 and a minus b means 983 माइनस 17. ठीक है. सो अब 983 प्लस 17 करना है, 983 माइनस 17 करना है. सो 983 प्लस 17 will give us 0 1 carry, 8 9 10 0 1 carry. So this is 1000 into, अब 983 माइनस 17 करते हैं. So this will give us 13, ये हो गया 7. ठीक है. 13 माइनस 7 will give us 6. and 7 minus 1 will give us 6. So 966. ठीक है. अब 966 into 1000 करना है. So this is very easy. 966 000. So 9,66,000 is the answer. So अब ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करना बहुत ईजी होता है. जस्ट दैट हमें देखना है कि हमें कौन सा पार्ट गिवन है, उससे ऑपोजिट पार्ट हमें अप्लाई करना है. ठीक है. So this was our example number 13, part number 2. Now coming to the third part. So the third part of example number 13 is 194 into 206. Yes. So now we have to multiply 194 into 206. Now this is 194. ये 206 से 6 कम है और ये 200 से 6 कम है और ये 200 से 6 ज़्यादा है. So we can write this as 200 minus 6 into 200 plus 6. I hope this is clear. 194 means 200 से 6 कम and 206 मतलब 200 से 6 ज़्यादा. So 200 minus 6 into 200 plus 6. तो ये हो गया a minus b, a plus b. So अब a minus b, a plus b again हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है. Using identity a minus b, a plus b equals to a square minus b square. So अब हमें ये वाला पार्ट यहाँ पे अप्लाई करना है. So a square means 200 square minus b square means 6 square. So 200 square means 4 zeros as it is and 2 2s are 4 minus 36. So अब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं. 40,000 में से 36 गए. So this will become 10, 9, 9, 9 and 3. So 10 minus 6 is 4. 9 minus 3 is 6. 993. So this gives us 39,964. So 39,964 is the answer of part number 3. So when we'll multiply 194 by 206, we'll get 39,964. Okay. So this was our third part of example number 13 of chapter number 9. Okay, so children, example number 14 is still left. So I'll make a separate video for that as our time is already up. So example number 14 की मैं separate video add करूँगी और don't forget to see that as well. And after example number 14, we are done with chapter number 9 of class 8. Alright. So now we will be starting with our 10th chapter of this same class 8. Okay, that is visualizing solid shapes. So stay tuned for my next video of example number 14 as well, and also of next chapter, visualizing solid shapes. So if you have any doubt,
If you have any query, please mention in our comment section below. I'll surely see. Okay, and stay tuned for my next video, and don't forget to like and share this one. Thank you.